how we yoga can help us in reversing diabetes. So as I said कि yoga में क्या है कि it helps you to control your mind, gain control over your mind, mastery over your mind. And this whole thing is about gaining that mastery over your mind. अब हम जो different different aspects हमने जो पहले बात की, so let's talk about as we know in yoga there are different levels of our existence. जो सबसे पहले हमारा जो लेवल है वो हमारा आउटर लेवल हमारा फिजिकल बॉडी है, विच इज कॉल्ड द अन्नमय कोशा. नाउ हाउ वी वर्क ऑन दिस अन्नमय कोशा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा डाइट, जो हम फूड खाते हैं. So try to have healthy, simple, wholesome food which is homemade, cooked freshly. स्टोर किया हुआ फ्रिज का खाना या इंस्टेंट खाना जो पैकेज आते हैं उनसे बनाया हुआ या प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ, कलर डाला हुआ, हाई इन फैट, फ्राइड, हाई ऑन स्पाइसेस, ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट. Have simple wholesome food. At the same time, your plate should have lots of vegetables on it. So instead, try to cut down on your carbs. Try to cut down on your rice, chapati, jowar, ragi, upma. Try to cut down on that. Have it, but in very small portions. But the major portion of your plate should be vegetables. All different color, rainbow vegetables. जितने सारे color की जितनी vegetables आप include कर सकते हैं morning, evening in your food on your plate. That will be more beneficial for your body. So that is very important. Diet, at the same time, eat on time. That is very, very important. Don't eat late in the night. And after each meal, so after breakfast, after your lunch, and after your dinner, try to walk at least for 10 minutes, which is a must. आप घर के बाहर नहीं जा सकते, no problem. लेकिन घर के अंदर walk. It will help to digest the food. At the same time, it will help to release that insulin also into your system and glucose को cells में accept होगा. Now another very important thing diabetics के लिए is when you eat your food, try to chew it very slowly. क्योंकि क्या होता है जैसे ही हम खाना खाते हैं and the food reaches our stomach, it starts releasing glucose. Now अगर आप बहुत fast खाना खाते हैं तो बहुत fast glucose release होने लगता है and it starts setting high. So when you eat slowly, chew कर करके खाना मुंह में again and again, then it gives a lot of time to our pancreas, enough time to start producing and releasing the insulin into your system. So when you eat slowly and you chew your food well, बहुत सारा काम आपका वहीं पे हो जाता है. तो फिर जब खाना अंदर जाता है and this glucose gets mixed with the insulin, it is the right proportion in which it mixes and it will help you not to spike your blood sugar levels. तो ये सबसे important बात है. अब आजकल क्या हो गया कि we don't give importance to how we are eating our food. Multitasking, हाथ में फोन होता है, you are either chatting with your friend or you are watching a video on your phone or you are watching your TV. हमें ना खाने का टेस्ट पता होता है ना हमें proportions पता होते हैं. Now proportions also are very important. Always try to have smaller portions. Balanced diet, smaller portions, freshly cooked home food. This is the key for your diet. I'm not saying that you don't eat out completely. Of course, you should eat out. Lekin you should know where to draw the line and where you should have that balance. Samatvam yoga uchyate. So you should be, maintaining that balance everywhere. Equanimity, equipoise, stability. ये सब बहुत important रहता है. Now, after diet, we come to our asanas. So there are 4 very important asanas which helps a lot, and especially twisting जब हम करते हैं तो that also helps to stimulate our pancreas. और जब pancreas stimulate होते हैं तो उसमें से ज्यादा insulin release होने लगता है and which helps to bring down the blood sugar. So Ardha Matsyendra asana, Vakrasana, Mayurasana, these are the asanas, and Dhanurasana. ये तो बहुत ही important वाले हैं which will help any diabetic to reduce their blood sugar levels and keep your sugar levels in check and in control. So this asana practices should be done on a daily basis. Now, अब बहुत important चीज क्या है जब हम आसना करते हैं? That is our focus. So for example, अगर हम वक्रासना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ट्विस्ट करते हैं. We just twist towards the side और उस पे पूरा ट्विस्टिंग हो जाता है. हमारे thoracic spine में ट्विस्ट फील होता है, हमारे abdominal region में फील होता है. So it's been said कि when you do your asana, इस तरह से कीजिए कि आपका जो पूरा awareness और focus हो वो आपके उस एरिया पे हो जहां पे आपको प्रॉब्लम है, on that sick organ. So take your awareness to that part
and be focused over there. ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान मैंने ट्विस्ट तो कर लिया लेकिन मैं देख रही हूँ इधर उधर और आई एम चेकिंग द टाइम, क्लास का बेंड होने वाला है या नेक्स्ट इसके बाद मेरी मीटिंग है, माई माइंड इज ओवर देयर. नो, प्लीज डोंट डू दैट. इफ यू वांट टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ द आसना, आपका पूरा फोकस उस बॉडी पार्ट पे हो रहा है जिसपे आप वर्क कर रहे हो थ्रू दैट आसना. So you take your complete awareness to your pancreas and that's how it will help you. अगर आपको लगता है कि मेरा फोकस नहीं हो रहा है, come out of the asana, repeat the asana, again go into the asana. And then once your focus is there on your asana, on that sick organ, उसके बाद release कर दीजिए that focus and deep expansion होना चाहिए, deep awareness, complete awareness and you should be completely relaxed. Your mind should be completely relaxed. तो क्या होता है नॉर्मली जब एब्डोमिनल फैट होता है बहुत लोगों को, तो पीपल थिंक कि हम जितना रिगरस प्रैक्टिसेस करेंगे हमारे एब्डोमेन के लिए तो उससे हमारा पेट कम होने लगेगा एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन बर्न अवर फैट सेल्स. बट द सेजेस हैव सेड दैट जब आप डीप अवेयरनेस स्टेट में होते हो तब automatically it will start working on your fat cells and you will start reducing your abdominal fat. So that is how it is. So that is why we say कि yoga is different from exercises. Exercises में हम सिर्फ burning पे ही ध्यान देते हैं. But when you practice yoga, you create internal awareness. You connect inwards. There is a deep connection happening with your mind, with your body, with your breath. So that plays a very important role. And of course, Surya Namaskar is very important. It is definitely like a physical activity which will help you to keep your sugar levels under control. Apart from yoga, yes, other activities like walking, running, jogging, playing sports, such sports जिसमें बहुत सारी body movement हो, like basketball, football, कि जिसमें body constant move करता हो. तो what happens is कि you are having physical activity as well as you are having a social activity. आप लोगों को मिल रहे हो, you feel good, you are going out of the house, fresh air, sunlight, all that also helps to your body. And जिनके लिए अगर ऐसा है कि you have leg issues, you feel that I can't run, I can't play such sports because now you have reached that age. So there are other practices like swimming आप कर सकते हो. Swimming तो हर age के कोई भी कर सकता है. You know, even in spite of having knee joint pains also, swimming is very good. You can do that. You can do cycling. Brisk walking कीजिए. These are also very important. तो आप yoga practices तो कीजिए लेकिन उसके साथ it is very important to do these practices also on a daily basis at least 30 minutes. So that will also help you a lot. So body movement helps a lot. Now also at your pranamaya level, pranamaya kosha level, kriyas are the cleansing techniques that helps us a lot. तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाज है डायबिटिक्स के लिए, दैट इज अग्निसारा एंड नवरी. सो अग्निसारा एंड नवरी हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन योर pancreas. And it increases because there is a negative suction happening near your pancreas. Negative suction pressure release होता है when we do these kriyas. So इससे बहुत सारा blood circulation improve हो जाता है pancreas में and even in our abdominal cavity. So that's how it helps us. And even Kapalbhati is very beneficial. Kapalbhati Kriya also directly works on your abdominal region. So it stimulates your abdominal muscles and all, fat cells at your abdominal region. And second, uska jo hai, I'll explain it in the Pranamaya Kosha, how it will help. So these Kriyas are very important and it is very, very important. Please do not do this Kriyas कोई video देखे YouTube पे. Correct. Always learn under a good trained teacher. उनकी presence में जाके Kriyas learn कीजिए because it can cause you more harm by just saving that money and not going to a good teacher and learning the correct techniques. So never ever do Kriyas watching any video. Do it under a guidance of a teacher and that's how you should be practicing it. That is very important. Yeah. Right. Now we come to our next part, that is the Pranamaya Kosha. So yeah, also and sleeping habits. Sleep on time, sleep early, get up early. Try to have the discipline in your life. Don't eat late in the night
and that will help you. And try to avoid completely smoking and drinking, you know. Correct. And yeah, so then we will come later on to the stress part. So now we come to pranayama kosha. तो pranayama kosha जो हमारा existence का second layer होता है, जो हमारे प्राणा, जो बेसिक फैक्टर ऑफ आवर लाइफ होता है. प्राणा मीन्स एनर्जी, जो हम फील नहीं, देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट कि यस देयर इज एनर्जी मूविंग इन माय बॉडी, और अभी मेरे एनर्जी लेवल्स हाई है, अभी मेरे एनर्जी लेवल्स लो है. एंड इट इज दिस प्राणा ओनली विच हेल्प्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी, क्योंकि जहां भी प्राणा ब्लॉक हो जाता है बॉडी में, देयर इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एन इन्फ्लेमेशन और सम एलिमेंट इन योर बॉडी. सो हियर आवर ब्रीदिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आसना चलो हम 1 घंटा करेंगे दिन में, या 45 मिनट्स करेंगे, 30 मिनट्स करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग ऐसी चीज है जो हम 24 आवर्स करते हैं. इट्स नॉट कि हम जब योगा क्लास अटेंड करते हैं या प्राणायामा क्लास अटेंड करते हैं तभी हम ब्रीथ करते हैं, बट वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली थ्रू आउट द 24 आवर्स, वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली, आप जो भी कहो, दोनों हिसाब से होता ही रहता है. सो Here, our breathing plays a very important role. Breathing का direct connection होता है हमारे stress levels के साथ और हमारे emotions के साथ. तो आपने देखा होगा कि when you are angry, you are anxious, तो आपका breathing बहुत fast हो जाता है. Correct. आपकी heart beats बहुत fast हो जाती है. But on the contrary, when you are very calm, you are very relaxed, आपका breathing इतना slow होता है कि you don't even come to know that your heart is beating. That's how it is. So it is said that especially for diabetics, you can do a 3-minute thing. So first, you should be doing hands stretch breathing technique or hands in and out breathing technique. जहाँ पे हम हमारे palms join करते हैं, yeah, and we expand. That you practice for 1 minute. Then, so I'm talking about practicing this when your stress levels are very high. People who are working or एंड दे आर डायबिटिक्स, तो क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, सारा टेंशन यहाँ पे हेड रीजन में चला जाता है, एंड यू आर सो स्ट्रेस्ड एंड ऑल दैट. सो फ्रॉम देयर यू स्टार्ट मूविंग योर अटेंशन एंड योर एनर्जी टू द एब्डोमिनल रीजन एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग. तो पहले आप हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग कीजिए 1 मिनट, उसके बाद आप कपालभाति कीजिए. सो कपालभाति इज अ क्रिया, बट एट द spiritual level, if we see, Kapalbhati helps to prepare us for meditation, क्योंकि it reduces the number of thoughts in our mind. And it's been said कि जो हमारा stress होता है वो क्यों होता है? Because of excessive speed in the mind of the thoughts. On an average हमारे mind में 60,000 thoughts आते रहते हैं. So when we slow down our breathing or we reduce the thoughts in our mind, it will help you to calm down and it will reduce your stress levels. And then lastly you practice abdominal breathing. So अपना एक हाथ अपने पेट पे रखिए. Even when you're working, it is absolutely fine sitting on your chair in your office. You can just take 5 deep breaths and it will work wonders. And this, even if you're not working, you are at home, every 1 hour you should be doing 5 deep breaths, abdominal breathing. And this slow breathing helps a lot in regulating your blood sugar levels. So, and there are a lot of studies which have shown that it improves your insulin dynamics, it controls your glycemic, indexes, it controls your immune parameters, it controls your stress hormones. So, all these studies have been conducted at ASVYASA, and after that, all those theses and all, they have, introduced this therapy. So, slow breathing is also very important, and even if you want, you can do 1 minute of Om chanting. That also does wonders along with this. So, सिर्फ 3 minute का है, only 3 minutes, and it can do wonders on your body by helping you to control. So 3 minute तो हर कोई के पास होते ही है, wherever you are, whatever you are doing. Correct. So yes, you should be doing that, and slow deep breathing will also help you to gain mastery over your mind. क्योंकि हमने थॉट्स को रिड्यूस किया है. देन वी कम टू मनोमय कोशा, विच इज अवर माइंड. तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए वी कैन डू साइक्लिक मेडिटेशन एंड ऑल्सो वी कैन डू ओम मेडिटेशन. सो जो हम ओम मेडिटेशन, ओम का इमेज हमारे सामने रख के उसे कॉन्स्टेंटली देखते हैं, एंड वी डू, और द साइक्लिक मेडिटेशन विच इज स्पेशली डिजाइन बाय एसवीएसए फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें आप 30 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद करके सारे डिफरेंट आसनास करते हैं. And at the same time, you are stimulating your body, also you are relaxing your body. So stimulate भी करते हैं asanas के through, and then different type of relaxation techniques से
हम हमारे पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं. तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू bring down your sugar levels as well as your stress levels. And then we come to a विज्ञानमय कोशा. तो विज्ञानमय कोशा हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है उससे कनेक्टेड होता है. यहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारे नोशनल करेक्शंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत वायलेंट रहता है, एंड विच कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस, स्पेशली एंगर, फियर, लस्ट, इन्फैचुएशन, एरोगेंस, ये सब, जेलसी, ये 6 are the main causes of negativity inside you. So when we work on correcting these negative emotions, इन्हें release कर देते हैं, and we move it to a softer stance and have softer emotions, pure love, that is when you automatically start healing from deep within, which is very important. And when you do this, you have to completely surrender to God. Ishvara Pranidhana, surrendering to the God. Yes, that is very important, because what happens is when you are anxious, you are constantly praying to God, but it's like, oh God, kya hoga, kya hoga, kya hoga, how, what will happen, what will happen, what will happen. But instead of taking that stress, remembering God in that situation under stress, इससे better है कि you say, God, I surrender to you, I leave it up to you to solve this problem. I trust you, I believe in you, and leave it up to God to decide further whatever has to happen. So when you will be in that state of mind, automatically things will fall in place and everything will be much better. So that surrendering to God is very important. So even in that 3-minute rule, which I said, okay, you do these 3 different practices, at the end of it, just surrender to God. Let it go and leave it up to God to decide what has to happen. Because we cannot control everything. Nothing is in our control. And especially in this past 2 years after Corona, we have realized that very well. कि हम जितना भी सोच लेंगे या प्लानिंग बना देंगे, लेकिन nothing is going to happen as per our plans. Everything is in God's hand, and God is the one who will decide for us. He is our creator. So surrender to God. That is very important. And then we come to Anandmaya Kosha, which is our last layer of existence. So यहाँ पे silencing of mind is very important. So try to silence your mind. So when you do practices of dharana, you do dhyana, meditation, all this leads you to complete blissful state where your mind is completely silent. Your mind is completely relaxed. You are not controlling anything. Your mind is calm. And when you have gained this mastery over your mind, that is which will help you. Because once your mind is in your control, you will know how you can control your diet. You will know how to regulate my exercise regime. You will be in control of your pranayama practice. You will be in control of not, having substances which are not good for your health. You will be in control of your sleep timings and everything. You will be more aware of whatever you will be doing in your day-to-day. You will be more mindful. So that is how it is. So do all this and at the same time have an attitude of let go. So let go of all the tensions, family issues, work-related issues, health-related issues. Just let it go. But don't let go on this change of lifestyle. Stick to it. And that's how you can definitely reverse your diabetes, when you are having control over these things and you have this discipline of reversing and working towards it consistently with discipline. Right. Yeah, okay. So that's how the yoga therapy helps us. Okay, we bring about all the changes at the same time. We work on our different levels. Right. इससे मेरे को एक एक्सपीरियंस भी याद आया. When I was in college, so there was a classmate of mine. उनको डायबिटीज था, टाइप 1 डायबिटीज. So उनको बहुत टाइम से था, मतलब शायद उनको कुछ डिसीज हुई थी, तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज बहुत ज्यादा उनको चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज हो गया था. बट व्हेन शी केम इनटू योगा, मतलब उनको 1 साल की प्रैक्टिस थी योगा की. जब वो हमारे साथ में आई थी, उससे पहले वो 1 साल से कर रही थी. तो उससे पहले जब था, उनको 6 इंजेक्शंस वो लेती थी दिन में अप्रोक्सीमेटली. तो विद इन 1 ईयर उनका हाफ हो गया था, कि वो
3 इंजेक्शंस पे आ गई थी, और वो इसलिए और कंटिन्यू रखना चाहती थी कि मैं और सीखूं, और ताकि मेरा भी कम हो और आगे भी लोगों को हेल्प कर सकूं। तो ये लाइव एग्जांपल मैंने खुद देखा है कि लोगों का ऐसे इंजेक्शंस भी कम हो जाते हैं, मेडिसिन भी कम हो जाती हैं। इनफैक्ट मतलब बहुत सारे लोगों का केसेस मैंने सुने भी हैं कि जहाँ पे उनको मेडिसिन छूटने में सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल उन्होंने जब चेंज किया, योग उनसे वो जुड़े हैं, Correct. योगा प्रैक्टिसेस की हैं, तो उनका इस चीज पे असर हुआ है। मतलब इट्स नॉट इन कि हवा में बात हो रही है, बट हाँ, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप कितनी कितनी मतलब होता है ना शिद्दत से या कितने विल पावर से आप कर रहे हो, उसके ऊपर True, बहुत very depend true. करता है And ये at the चीज। same time, you should believe in what you are doing. That belief plays a Right. very important role. Because आप कुछ भी कर दो, हर चीज कर दो, लेकिन belief अगर strong नहीं होता है, back of the mind अगर वो doubt रहता है कि is this really going to help me? Then it will not Right. work. But when you have a very Correct. strong belief, it can do anything. राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड आई एम रियली अमेज्ड इतना कुछ जानने का, मतलब आपसे तक कुछ जानने को मिला। एंड आई वाज लाइक कि मैं मतलब आई एम गेटिंग स्पीचलेस कि इतना कुछ, इतना अच्छे से और इतना आपने तरीके से सीक्वेंशियली आपने सारी चीजें समझाई अबाउट एवरी कोश एंड हाउ डायबिटीज प्लेज रोल, एंड सारा कोश का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड हाउ वी कैन चेंज ईच एंड एवरी लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सो इट वॉज एन वंडरफुल टॉक विद यू कि बहुत ही कुछ जानने को मिला। मतलब ठीक है, एक लास्ट सवाल और फॉर द And पीपल one जो more point, even I Right. one more point, even I want to include, कि along with all this, mudra therapy also plays a very important role in our healing. Yes. So there are mudras like Surya Mudra, Apan Okay. Mudra, and Prana Mudra. When we do these mudras, so it helps. So आप 10 minutes each mudra को इसी sequence में कर सकते हैं. And if you don't have time of sitting for 30 minutes, what you can do is जो आपका 10 minutes का walk मैंने suggest किया है after your breakfast, lunch and dinner, while walking also you adopt the mudra. So this will be your Surya Mudra. Okay. You're placing the thumb on your Right. ring finger. Okay. This Okay. is your Surya Mudra 10 minutes. उसके बाद आप अपान मुद्रा करोगे where you touch your thumb and your middle and the ring finger. Okay, 10 Right. minutes. And then you end it with prana mudra. So this will help you to further strengthen your immune system. First two will work on obesity and diabetes, and the last one will work on strengthening your immune system. So that's Okay. how mudras also show beautiful results in healing your body. ओके, Yeah. एब्सोल्युटली वंडरफुल। Yeah. तो So, मेरा सवाल ये था yes. कि अगर जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, सीनियर सिटीजन जैसे हो गए, 60 प्लस हो गए, ज्यादातर प्रॉब्लम्स उनके साथ में भी होती हैं। मतलब अब थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा 40 प्लस में ही होने लग गई हैं, लेकिन इनिशियली पहले जब होती थी वो 50 प्लस 60 प्लस में होती थी। तो मेरा सवाल ये है कि 50 प्लस 60 प्लस वाले जो इंसान है वो ये सारे आसन उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल है। तो इज देयर एनी इजी ऑल्टरनेटिव टू दोज आसनास जो कि वो कर सकते हो? Now two things I would like to talk about here. One is कि जैसे this is a, हम ये भी कहते हैं कि genetic disorder है और पहले से आता हुआ है and all that. But if we see in the past जो हमारे great grandfathers थे, उनको इतना diabetes नहीं था. We have not heard about it. All of them having it. या ऐसा भी नहीं कह सकते कि तब इतना awareness नहीं रहा था, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें diabetes था. No, it was not that. It is the modern lifestyle which is causing this to spread like this, you know. So even if the genetic factor is there, but it's somewhere to a big extent, your lifestyle plays a big role. And so हर कोई में वो genes तो हो सकते हैं. Because see, for example, if your father is having it, चारों siblings में वो genes हो सकते हैं, but those genes will manifest only when you are living a lifestyle which causes it to manifest into diabetes. Right. So that is a very big difference. Now coming back to your second question of how the senior citizens can practice it. So I would like to tell you, since 2 years I have been working with senior citizens. मेरे special classes होते हैं senior citizens के alternate mornings and evenings में भी रहते हैं gentle flow classes. Also, I conduct webinars on every Thursday. As I'm working with VS Wellness, we are doing sessions for Khayal community करके है. तो Khayal community is basically for senior citizens. जिसे स्टार्ट किया गया था स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक उन सीनियर सिटीजन्स के लिए कि जो अब घर में ही है ऑल द टाइम, बाहर नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग अपना टाइम कैसे पास करेंगे. तो इट्स अ वंडरफुल ग्रुप व्हिच वर्क्स ऑन टीचिंग देम एवरीथिंग. तो उन्हें टेक्नोलॉजी भी सिखाते कि जूम मीटिंग में कैसे लॉग इन करना है, कैसे आपका फोन यूज करना है. देन उन्हें हाउजी खिलाते हैं, टम्बोला खिलाते हैं वीकली.
फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स होती है, डिफरेंट डॉक्टर्स बुलाते हैं. सो दे टेक सेशंस विथ अस एवरी थर्सडे इवनिंग. देयर इज अ वेबिनार व्हिच आई कंडक्ट एवरी थर्सडे इवनिंग. And in this webinar, there are issues related, diseases or ailments related to senior citizens and how they can do these practices. So, Correct. बहुत सारे modifications हम कर सकते हैं and senior citizens can beautifully practice all the asanas with modifications. तो हम कभी yoga strap use करते हैं, कभी हम chair use करते हैं, या Okay. उसी आसन को हम simplify करके किस तरह से उन्हें हम करवा सके. That's what I teach. So it is not कि भाई आप 60 के ऊपर हो या आप 70 के ऊपर हो तो आप नहीं कर पाओगे. In fact, you won't believe in my senior citizens batch, there are students who are in the 70s and all, and they are beautifully practicing. Yes, I would not say that they can do each and everything that I show, क्योंकि हर एक का बॉडी का लिमिटेशन होता है. Somebody in their 60s might have shoulder pain and somebody might have back pain and somebody might have knee joint pain. सबके pains different रहते हैं. लेकिन overall they are able to do it very wonderfully, and yes, they are deriving the benefits. So it is not that age is any limitation for practicing yoga. If there is any limitation, that limitation is in your mind that I can't do it. Correct. Right. Absolutely right. Absolutely wonderful. ये मतलब आपसे बात करके and the work you are doing, I really appreciate it कि आप इतना you सारा so काम much, कर रहे हैं, Karima. सीनियर सिटीजन्स की भी हेल्प कर रहे हैं. नहीं, एक्चुअली में इट्स रियली अप्रिशिएबल कि आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू हियर एंड हैव टू, मतलब आपसे बात हुई, सब चीजें इतना कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला. आई एम रियली ग्लैड एंड रियली थैंकफुल टू यू एंड हैव एन वंडरफुल It's एक्सपीरियंस my विद यू pleasure, टुडे. Karima, to have me over here and giving me this platform to spread this word and how people should know how yoga helps. Because दवाई तो हम Right. पूरी लाइफ खाते रहेंगे, Correct. but then that is not the cure of your problem. Right. So why not to use alternate therapies when they are available, you know, Right. and heal our body and feel better. Right. Absolutely right. Absolutely wonderful.